Hello students, welcome to another session of BioCool classes. और आज we will be talking about NSEJS 2008-2009 का जो पेपर है उसको we will be discussing. तो NSEJS का जो पेपर है स्टूडेंट्स, इसका जो तैयारी है ये तैयारी तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9-10, बट इसका जो पेपर है इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल बेस एंड वेरी एप्लीकेटिव टाइप ऑफ पेपर. तो यहाँ पे आज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द biology portion of the NSEJS paper. So, and my name is Dr. Shauna Roy, and welcome to my BioCool classes. So let's discuss about this 2008-2009 NSEJS paper. As we know students के just the basic criteria के NSEJS is the first step. उसके बाद once students clear that, you go to the Indian National Junior Science Olympiad. उसके बाद you go to the orientation cum selection camp, and then we go to the pre-departure training. उसके बाद students are selected to the International Junior Science Olympiad. तो ये सारे different kind of steps है. तो ये जो एग्जाम होते हैं NSEJS, इट्स अ वेरी टफ, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया. तो इसका जो प्रिपरेशन है, द प्रिपरेशन इटसेल्फ विल प्रिपेयर यू फॉर नीट एग्जामिनेशंस. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ NSEJS एग्जाम कि इसका जो तैयारी है, इस तैयारी से नीट का भी प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, these concepts are very, your concept has to be very strong, your base has to be very strong. तो आज we will see the 2008-9 paper. वैसे keep watching my YouTube channel for the PYQs from other years also. So let's just get into the paper without wasting any more time. First question जो है यहाँ पे, the first question says कि podocytes, may activate the pen. Just 1 second. Okay. तो देखो यहाँ पे podocytes are exclusively located in where? पोडोसाइट्स कहाँ पे मिलता है? तो देखो ये एक लाइव प्रोसेस है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है. तो पोडोसाइट्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन किडनीज. किडनी में देयर इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड द, सो किडनी के अंदर कितना होता है? इनसाइड अ किडनी, inside a kidney we have the Bowman's capsule. So kidney, basically if I draw a kidney or if I write a kidney, as a kidney is made up of 1 million nephrons. Each kidney में there are 1 million nephrons. 1 million nephron होता है हर किडनी में. Nephrons are the structural and the functional unit. क्यों इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? क्योंकि यहाँ पे यूरिन प्रिपरेशन होता है. तो यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड दिस nephrons. Nephrons are made up of the glomerulus, Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, Henle's loop, distal convoluted tubule and collecting duct, है ना. तो ऐसे जो Bowman's capsule होता है, इट्स लाइक अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना. और इसके अंदर ऐसे we will see the tuft of capillaries are present, which is called the glomerulus. The glomerulus, this tuft of capillaries, which is called, this is the afferent arterioles, this is the efferent arterioles. So afferent, and जो निकल रहा है यहाँ से इसको we call efferent, है ना.
यहाँ से blood is coming and blood is, so ये capillary network है, this is a capillary network, this is a capillary network. So since ये capillary network है, there's a lot of pressure. The pressure is creating the filtrate which is called the glomerular filtrate, या इसको we call the nephric filtrate also we call. Now what are podocytes? Podocytes are basically, podo means feet, पैर जैसे, feet. So podocytes are these foot like processes. ऐसे ऐसे यहाँ पे these are these foot like cells called the podocytes. और ये podocytes they help in filtration process. यानी कि किडनी दैट इज गोइंग थ्रू अ एक्यूट किडनी फेलियर, जिसका किडनी का प्रॉब्लम है, पीपल हु आर गोइंग थ्रू रीनल नेफ्रोपैथी. नेफ्रोपैथी का मतलब किडनी जिसका डैमेज हो गया है, पीपल हु आर फेसिंग द एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसका किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, सो देयर पोडोसाइट्स आर डैमेज्ड, एंड ड्यू टू द डैमेज ऑफ द पोडोसाइट्स फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम होता है. Lot of big proteins, macromolecules जिसको कहते हैं, proteins are escaping into the urine, so जिसको we call proteinuria. Blood also gets escaped, जिसको कहते हैं hematuria, blood present in the urine. So podocytes play a very important role in filtration process in the kidney. और ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, तो ये पोडोसाइट्स के लिए, सो पोडोसाइट्स हैज टू बी वेरी नाइस, है ना, ये बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए. अगर इसका कोई डैमेज हो गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट होने में प्रॉब्लम होता है. ओके, सो पोडोसाइट्स आर बेसिकली लोकेटेड इन द किडनी. लेट्स सी सम पिक्चर्स ऑफ पोडोसाइट्स एंड दैट विल हेल्प अस. तो यहाँ पे these cells we see are called the podocytes. These cells are called the podocytes. This is a text which says the outer surface of the Bowman's capsule. Outer surface of the Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule, right? So here we have these kind of foot-like cells called the podocytes, and they have a crucial role in filtration of waste and excess of fluid from the bloodstream. I think that is enough explanation. We'll go to the next question, which is testis descends down the scrotum. Testis descends down the scrotum. Through what? Topic is human reproduction. यहाँ पे uturator canal, inguinal canal, vertebral canal या vertebra atrial canal. तो आंसर इज द inguinal canal. इंग्विनल कैनल क्या होता है? ये एक लोअर एब्डोमेन में एक ऐसा, इट इज लाइक अ स्मॉल कैनल और एक पैसेज जैसे होता है. तो लेट्स ड्रॉ द, अगर ये ह्यूमन एक लेट्स से मेल, दिस आर द थाइज, यहाँ पे दिस इज द स्क्रॉटम sac. Let's say this is the scrotum sac. This is the scrotum sac. और स्क्रॉटम का sac के भीतर ऐसे there are the pair of testes. So this is the scrotum sac जिसके अंदर testis होता है. Inguinal canal is basically ऐसे एक कैनल होता है जिसको we call the inguinal canal. और ये inguinal canal के अंदर we have all the different kind of structures called the vas deferens. Vas deferens होता है इसमें. Also the testicular veins are present. ये सब कुछ inguinal canal से passage होता है. So it passes through the inguinal canal. So
we look at a picture, ये हो गया inguinal canal, and through the inguinal canal, ये inguinal canal female में भी होता है. In male, all the spermatic cord in the men, all the spermatic cord in the men are passing through the inguinal canal. Spermatic cord क्या होता है? Spermatic cord contains testicular blood vessels. Testis का जो blood vessels, it contains nerves, it contains the vas deferens. ये सब कुछ यहाँ से पास होता है. Also, according to this question, the testis is also descending through this inguinal canal into the scrotum. So it's basically this channel which is connecting the scrotum, और यहाँ से the spermatic cord is passing, the testis is also passing into the scrotum. Female में the inguinal canal is present, and female में the round ligament, female में round ligament एक structure होता है, round ligament, and this round ligament actually passes through the inguinal canal. So the round ligament in the woman opens up in the labia majora. So female का जो vagina होता है उसके बाहर में there's a fold of skin which is called the labia majora, which is called the external genitalia. This external genitalia develops in female during the puberty. So females का mainly before the puberty, females only have the vagina. जैसे ही puberty होता है, there is a outside flap of skin, इसको कहते हैं external, the labia majora, labia minora, clitoris, ये सब different kind of external structures are developing. तो वहाँ पे there is this canal called the inguinal canal, जहाँ पे the round ligament is passing. And round ligament क्या होता है? Round ligament is something that is supporting the uterus of the female का जो reproductive system, if you see, उसका uterus is supported by the round this round ligament which is passing through the inguinal canal. तो देखो students, एक चीज, ये सब जो concepts, these concepts like inguinal canal, उसके बाद podocytes, ये सारे concepts normally we don't talk about in NCERT. अगर 9 या 10 का देखो biology, if you study, we don't see these kind of concepts. तो इसके लिए थोड़ा extra we have to study. That is what the NSEJS preparation is, that we have to study extra. We have to look at books like Campbell, Pearson, थोड़ा all these kind of foreign books we have to see. Class 11, 12 का biology, NCERT we have to study, है ना? तो ये सब कुछ we have to do some extra अगर we want to crack in the NSEJS examination. Okay, so NSEJS में 300 students are selected, which who go to the Indian National Junior Science exams, right? तो वहां से again 35 students are selected who are going to the orientation cum selection camp. Anyway, so let's move on to the next question. यहाँ पे this is basically a side view of the male reproductive system, and we know this is the scrotum sac. यहाँ पे testis, this is the vas deferens. कैसे vas deferens is carrying the sperm to the seminal vesicle, जहाँ पे sperm is temporarily stored. उसके बाद कैसे sperm is meeting the urethra. ये urethra कहाँ से निकलता है? From the urinary bladder. Urinary bladder के नीचे we have the prostate gland, और यहाँ पे urethra passes through the penis, और the urethra is the common passage of urine and the sperm, और कैसे यहाँ पे निकल आ रहा है through the penis outside. Next question is from the diversity chapter, और यहाँ पे the question is pteridophytes are characterized by dash venation in their leaves. कौन सा venation we see? Multicostate reticulate, divergent, unicostate parallel, forked, unicostate reticulate. तो पहले तो ये सब सारे venation के बारे में we should have an idea what are these kind of venations. तो यहाँ पे answer is forked. Again देखो ये जो question है, it's not a typical NCERT 9-10 question. I wonder how many students they actually can answer these questions.
तो इसीलिए अगेन आई कीप सेइंग थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी इज इम्पोर्टेंट फॉर एनएससीएस। और ये एक्स्ट्रा स्टडी विल नॉट बी बेकार, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टडी विल हेल्प यू टू क्रैक द नीट। दो स्टूडेंट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर एनएससीएस, उसका नीट को क्रैक करने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट इन माई करियर एज अ टीचर आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी सीरियसली टारगेटिंग एनएससीएस। एनएससीएस में सिलेक्शन हो कि ना हो, नीट तो उसका क्रैक हो जाता है, क्योंकि उसका 9-10 का तैयारी इतना स्ट्रांग हो जाता है। दे ऑलमोस्ट फिनिश्ड 80% ऑफ द 11-12 मटेरियल। तो 11-12 में जाने के बाद दे कैन टोटली फोकस ऑन द नीट, है ना, एंड द प्रिपरेशन बिकम सुपर। तो एनीवे, सो टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्क्ड वेनेशन। तो यहाँ पे वी हैव टू आल्सो नो द अदर काइंड ऑफ वेनेशंस क्या होता है। We know what is pteridophytes, right? Pteridophytes ये प्लांट का जो डिफरेंट डिविजन होता है ना, we have the thallophytes, we have the bryophytes, we have the pteridophytes, we have the gymnosperm, we have the angiosperm, है ना, ऐसे there are these 5 divisions in the plant kingdom. और pteridophytes are something जहाँ पे first time we see vascular bundles are coming, xylem and phloem का concept। यहाँ पे the entire plant body is differentiated into roots, stem and leaves, ये सब differentiation, and the plant is first time moving from the aquatic to the it is actually land plant। देखो bryophytes को we call amphibians of the plant kingdom, क्योंकि bryophytes का both land and water दोनों जगह में होता है। thallophytes mainly aquatic होता है, but pteridophytes में पूरा के पूरा they become land plants, terrestrial plants, okay। And यहाँ पे also we see the presence of the vascular bundles, xylem and phloem का concept। तो ये जो इसका लीफ का पैटर्न, so we'll talk about the concept of what is a forked venation। तो यहाँ पे देखते हैं different kind of venation pattern। This is a forked venation, like a fork, right? ऐसे fork जैसे venation। What is a यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट। देखो यूनिकॉस्टेट का मतलब वेन, यहाँ पे एक वेन यूनिकॉस्टेट। जब वी कॉल मल्टी कॉस्टेड, उसका मिड वेन बहुत सारे मिड वेन। तो इसको अगर वी जस्ट सो यहाँ पे वी लुक एट दिस इज एक्चुअली अ सिंगल मिड वेन। तो इसको वी कॉल यूनिकॉस्टेट। कॉस्टा का मतलब मिड वेन। यहाँ पे देखो वी हैव मल्टीपल मिड वेन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सो वी कॉल इट मल्टी कॉस्टेड। इसका जो भीतर में वेनेशन, इट इज लाइक रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ऐसे नेटवर्क जैसा है, इट इज लाइक अ नेटवर्क। दिस इज अगेन अ मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट। दिस इज अ multi, so B is basically multi-costed reticulate convergent, and this is a multi-costed reticulate divergent। ये हो गया एक यूनिकॉस्टेड पैरेलल, क्योंकि वेनेशन देखो पैरेलल है। so if we zoom this thing, let's zoom it more, we can clearly see कैसे यहाँ पे पैरेलल वेनेशन। ये हो गया अगेन मल्टी कॉस्टेड, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे कितने सारे मिड वेन्स आर देयर, दे आर पैरेलल, सो इट्स अ मल्टी कॉस्टेड पैरेलल कन्वर्जेंट, एंड दिस इज मल्टी कॉस्टेड पैरेलल डाइवर्जेंट वेनेशन। ये हो गया फोर्क वेनेशन व्हिच वी सी इन टेरिडोफाइट्स। एनएससीजेस का बहुत सारे क्वेश्चंस, टू बी वेरी फ्रैंक, इसका आंसर इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर वी आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, pteridophytes having fork venation, in fact if you do proper research you will see के pteridophytes में multi-costed divergent भी मिलता है। ऐसा नहीं कि pteridophytes में नहीं मिलता है। so this is actually one thing we have to keep in mind। um, mm, so some questions are little bit debatable। coming to the next question, ripened follicle in the ovary is called, ripened follicle in the ovary को हम क्या कहते हैं? इसको we call the Graafian follicle। ripened follicle, ripen का मतलब जो पक गया है, पक गया है, that means which is actually matured, we call it the Graafian follicle। तो फीमेल का जो ओवरी होता है, ओवरी में we have to know कि how, what is the primordial follicle, what's the
primary follicle, what's a secondary follicle, what's a Graafian follicle, what's a corpus luteum. यहाँ पे देखो corpus luteum. So these concepts you have to know. Graafian follicle is the mature follicle और Graafian follicle के अंदर the egg is formed. और ये Graafian follicle को तोड़ के egg निकल जाता है on the 14th day of the menstrual cycle, which is called the ovulation. तो थोड़ा सा देखते हैं about these concepts. So this is basically the ovary of the female, and we can see that there is the primordial follicle. ये primordial follicle, each ovary has 2 to 3 lakhs of this primordial follicle. और ये जब एक female takes birth, उसका ovary में ये immature follicles are present. तो ये primordial follicle, so follicle is like a jacket जिसके अंदर the egg is developing. So primordial follicle starts developing, jacket starts growing, उसके भीतर में the egg is also maturing. So primordial से हो जाता है primary follicle, उसके बाद हो जाता है secondary follicle, and then it forms the Graafian follicle. So ये Graafian follicle is a mature जिसके अंदर यहाँ पे थोड़ा पानी होता है, fluid होता है, which is called the atrium. And कैसे देखो this primordial follicle, the Graafian follicle, it breaks, releasing the egg. इसको we call ovulation, happening on the 14th day of the menstrual cycle. उसके बाद the Graafian follicle becomes the something called the corpus luteum. Corpus luteum is like an endocrine, it's like an endocrine gland. ये एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. क्यों, व्हाई डू वी कॉल द कॉर्पस लूटियम एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन जैसे एक हार्मोन इज सिक्रीटेड. ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब बेसिकली इफ द स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग द एग, इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो आके फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब से आके ये इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल. और ये यूट्राइन वॉल में देयर शुड बी अ प्रॉपर एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिल्ड विद ब्लड वेसल्स, जहाँ पे द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड और यहाँ पे फीटस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल का मेंटेनेंस ये होता है due to the progesterone that is secreted from this corpus luteum. तो ये corpus luteum एक temporary endocrine gland का function होता है. अगर sperm does not actually fertilize the egg, तब corpus luteum degenerates, progesterone secretion also stops. So this is basically the concept. So let's go back to the notes a little bit. और ये देखो, दिस इज ऑन माय लेफ्ट साइड वी हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे वी हैव द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द ओवरी कनेक्टेड टू द यूटेरस विद द ओवेरियन लिगामेंट. ये हो गया एंडोमेट्रियम लाइनिंग. यहाँ पे दिस इज द एम्ब्रियो, ओके, दिस इज द सर्विक्स नैरो कैनल, और ये हो गया वजाइना विच इज द बर्थ कैनल. सो द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑकर्स बिफोर द बर्थ and during the puberty के टाइम में डेवलपमेंट होता है. और in the ovary primordial follicle which are the earliest stage of follicle development. follicle means jacket, उसके भीतर में the immature egg is developing, consists of a single layer of granulosa cells. Anyway, we don't need that. But as the follicle matures, it becomes primary. So primordial से हो गया primary, और प्राइमरी से हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है. ग्राफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर फॉलिकल विच इज रेडी टू ओवुलेट, यानी कि यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके द ओवम ऑफ द एग कम्स आउट, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको कहते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम. और at ovulation the Graafian follicle ruptures, और यहाँ से the egg is releasing the oocyte or the egg into the fallopian tube, right है ना? तो Graafian follicle से egg निकल के fallopian tube में लॉन्च होता है. fallopian tube का जो फ्रंट पार्ट ऐसे देखो कोनिकल जैसे होता है, और उसका ऐसे उंगली जैसे होता है, जिसको we call fimbriae. So fimbriae catches the ovum, ये ऐसे उंगली जैसा है, ओवम को ऐसे कैच कर लेता है in the fallopian tube. एक बार पिक्चर को देखते हैं. So this is basically the fimbriae, this is the ovary. यहाँ से
ओवम निकलता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल एंड ये ओवम या एग को फीमरी कैच कर लेता है और इट एंटर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब. अगर फैलोपियन ट्यूब पे अगर दिस टाइम द फीमेल हैज हैड अ सेक्सुअल इंटरेक्शन और कॉपुलेशन विद द मेल, और अगर ये फैलोपियन ट्यूब में देयर इज स्पर्म प्रेजेंट, स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग एंड zygote is formed, zygote will develop into embryo. Okay, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो कैसे यहाँ पे दिस इज द ओवुलेशन टेकिंग प्लेस, ग्राफियन फॉलिकल इज ब्रेकिंग डाउन and the ovum is coming out, and that leads to the formation of corpus luteum, which is a temporary endocrine gland. Um, the ruptured follicle transforms into corpus luteum, which is a temporary endocrine gland, secretes progesterone to support the pregnancy. If pregnancy does not occur, corpus luteum degenerates, leading to decrease in progesterone secretion. Eventually, menstruation starts. Menstruation starts का मतलब menses, जहाँ पे menstruation में जो bleeding होता है ना, first 5 days, so that bleeding takes because the entire endometrium wall is degrading. पूरा endometrium wall का degradation हो रहा है, वो तोड़ जा रहा है, and a new cycle is going to start. यहाँ पे rebuilding of the endometrium will start. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि ये एक एनएसजीएस का एक लेक्चर है, तो यहाँ पे आई विल बी टीचिंग इन अ हायर लेवल. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस लेक्चर उसका दे हैव ऑल दिस आइडिया, है ना, दे आर ऑलरेडी एडवांस्ड लर्नर्स, है ना, वो आर रेडी टू टेक द एनएसजीएस. तो इसीलिए वी विल बी गोइंग लिटिल बिट इन अ हायर लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैटरल मेरिस्टेम इंक्लूड्स व्हाट. अगेन ये क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज, उसका क्वेश्चन लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है. नाउ वी नो के लैटरल मेरिस्टेम द आंसर इज ए fascicular cambium and cork cambium. fascicular cambium, cork cambium. तो lateral meristem क्या होता है. lateral meristem we know के plants have two kinds of tissues. We have the meristematic tissues and we have the permanent tissues. meristematic tissues जो होता है उसमें three kinds of meristems are there. We have the shoot, इसका एकदम ऊपर में apical meristem is present. apical meristem, उसके बाद ऐसे ऐसे नोड्स होता है, और इन पिंक. सो दिस इज बेसिकली द मेरिस्टेम जिसको हम कहते हैं द इंटर कैलरी मेरिस्टेम. इंटर कैलरी मेरिस्टेम का क्या जॉब है, क्या रोल है. इसका रोल इज एक्चुअली कॉजिंग इंटरनोडल ग्रोथ. इफ दिस इज अ नोड, ये भी हो गया एक नोड, इसको हम कहते हैं इंटर नोड. इंटरनोडल ग्रोथ, इट हेल्प्स, आल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द पीटियोल, है ना. लीफ का ब्लेड का भी ग्रोथ होता है, दैट इज द इंटरकार्डियल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम इज हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ द हाइट. एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे ऑक्सिन होता है. लैटरल मेरिस्टेम इज बेसिकली ऐसे ऐसे लैटरल मेरिस्टेम विच इज सराउंडिंग द स्टेम, लैटरल मेरिस्टेम. और ये लैटरल मेरिस्टेम हेल्प्स इन द गर्थ, इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट. यानी प्लांट ऐसे मोटा होता है ना, प्लांट का जो स्टेम ऐसे मोटा हो जाता है. ये जो डायमीटर में उसका जो ग्रोथ होता है, इंक्रीज इन द डायमीटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप का होता है. वी हैव द वास्कुलर कैम्बियम which can also be called as a fascicular cambium, and the cork cambium. Cork cambium gives rise to cork. Cork एकदम एक ट्री का बाहर में एक टफ स्ट्रक्चर होता है which is made up of suberin. It is called the cork, and this cork protects the tree from different things, from animal attack, also from desiccation, from water loss, है ना. कॉर्क बहुत टफ होता है. कॉर्क का बहुत इंडस्ट्रियल यूज भी होता है. कॉर्क से शटल कॉक का जो नीचे का पार्ट होता है ना, उससे दैट इज मेड आल्सो. कॉर्क इज यूज्ड फॉर लॉट ऑफ इंसुलेटिंग थिंग्स. इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फायर. क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस रैकेट, ये सब कुछ बनता है फ्रॉम द कॉर्क. So fascicular cambium and cork cambium. Fascicular cambium can also be called as the vascular cambium, which is present between the xylem and the phloem. And cork cambium जो बाहर में होता है, cork cambium gives rise to the cork. So that is basically what is the lateral meristem. एक बार let's look at the pictures. देखो यहाँ पे this picture is good.
ये एक यंग स्टेम का पिक्चर, ये एक ओल्ड और मैच्योर्ड स्टेम का पिक्चर, not exactly old but a mature stem. As we can see how the xylem is brown, phloem is blue, और जाइलम के और इसको इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम. We all know कि xylem helps in passing of minerals and water from the root to the top of the plant, and we know कि phloem का जो role है, it is passing the food that is made in the leaves by the process of translocation. So phloem के नीचे, primary phloem के नीचे we have secondary phloem, primary xylem के ऊपर we have the secondary xylem. उसके बीच में ये जो एक राउंड रिंग है उसको we call vascular cambium, वास्कुलर कैम्बियम. और देखो ये जो एपिडर्मिस होता है ना बाहर में, राइट, द आउटसाइड एपिडर्मिस, कैसे इट बिकम्स द कॉर्क कैम्बियम, एंड ये कॉर्क कैम्बियम के बाहर में कॉर्क इज मेड. इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि कैसे फ्लोएम और जाइलम के बीच में देयर इज द fascicular कैम्बियम व्हिच इज आल्सो द वास्कुलर कैम्बियम. वी लुक एट द, इस पिक्चर को देखते हैं तो कॉर्क कैम्बियम, उसके बाहर में कॉर्क, एंड दिस फेलोडर्म. So corcamium के नीचे we have a phyloderm, उसके नीचे we have a secondary phloem. So basically phyloderm is the combination of the primary phloem and the cortex cells. वो दोनों मिलके हो जाता है एक phyloderm. So that's some kind of concepts we need to learn. So now we know what is the lateral medistem, we know what is the how it is made up of fascicular cambium and the cork cambium. Okay, next question is when a cell is fully turgid, which of the following will be zero? एक सेल जब फुली टर्जिड हो जाता है, विच इज द फॉलोइंग विल बी, ये देखो फ्रॉम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन. एक सेल जब फुली टर्जिड हो जाता है तो कौन सा चीज यहाँ पे जीरो होगा? द आंसर चॉइसेस आर टर्जर प्रेशर, वॉल प्रेशर, सक्शन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो हर टाइप ऑफ प्रेशर को उसका कॉन्सेप्ट वी शुड नो. what is the turgor pressure, what is the wall pressure, what is suction pressure, osmotic pressure. यहाँ पे इस आंसर का the correct answer is suction pressure. What is the turgor pressure? Turgor pressure, in very simple term, it is basically the pressure which is the cytoplasm is applying on the cell wall. Okay, turgor pressure, जब एक सेल के भीतर में पानी घुस जाता है, when a plant cell becomes turgid, it is the pressure that is the cytoplasm is applying on the cell wall, उसको कहते हैं टर्जर प्रेशर. वॉल प्रेशर क्या होता है? वॉल प्रेशर इज बेसिकली व्हेन द सेल वॉल, द जो साइटोप्लाज्म के ऊपर जो प्रेशर डालता है उसको भी कॉल वॉल प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली कॉन्सेप्ट इज एक सेल जब एक सॉल्यूशन के अंदर रहता है, अभी डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इनसाइड द सेल, सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू द आउटसाइड मीडियम, मीडियम का सोचो इट्स हाइपोटोनिक मीडियम है ना, हाइपोटोनिक मीडियम यानी कि मीडियम का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो इट इज द प्रेशर दैट कॉजेज द वाटर टू कम इनसाइड. इट इज द प्रेशर because of the concentration difference of the solute that leads to the movement of water inside the cell या outside the cell. इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. सक्शन प्रेशर क्या होता है? सक्शन प्रेशर का बहुत एक सिंपल का कॉन्सेप्ट है सक्शन प्रेशर. तो सक्शन का मतलब जब एक सेल पूरा टर्जिड होता है, when a cell is completely turgid, एक सेल के भीतर पूरा पानी घुस गया, इट्स टर्जिड, उस टाइम में there is no suction, यानी कि the water will not come out of the cell and the cell will not collapse. Simple concept, suction pressure. So basically suction pressure कैसे है we can understand. So जब एक सेल टर्जिड रहता है तब उसका कोई suction pressure नहीं रहता है, when a cell is filled with water. अभी कब suction pressure falls? Suction pressure falls जैसे सोचो in a situation when a cell is inside in a hypertonic solution. तो एक बार let's say this is actually a beaker और यहाँ पे we have a cell और ये cell is placed inside a hypertonic solution, यानी कि बाहर में बहुत ज्यादा solute concentration is very high. So now what is happening कि water by osmosis is moving out. So now the water potential outside is low, है ना,
compared to the water potential inside the cell. तो water potential का ऐसे साइन होता है, ये water potential inside the cell is बहुत हाई, क्योंकि सेल का water potential ज्यादा पानी है, सॉल्यूट कम है, तो अभी पानी बाहर निकल रहा है, तो now the suction pressure, so this is called the suction pressure. ये suction pressure के कारण, so now suction pressure, अभी the suction pressure is not zero because the cell is now collapsing. Make sense? जब सेल एक पूरा टर्जिड होता है, जब सेल के अंदर पानी रहता है, तब सक्शन प्रेशर जीरो होता है. जब जैसे ही पानी निकल रहा है एंड द सेल इज कोलैप्सिंग, तब देखो सक्शन प्रेशर जीरो नहीं रहता है. So when we look at this concept of suction pressure is it is a pressure which is created by reduction of the water potential. It is pressure created by reduction of water potential in the surrounding of a cell. Reduction of water potential when a cell moves, when water moves out of the cell due to osmosis or other reasons, a low pressure or a suction is created. एक low pressure हो जाता है, एक suction is created. Okay, this causes the cell to collapse as the turgor pressure is no longer balanced by the wall pressure. And turgor pressure क्या होता है? Turgor pressure is basically the cytoplasm, the pressure which is applying on the cell wall. Wall pressure is the cell wall applying on the cytoplasm. ये दोनों balance होना चाहिए in a turgid cell. जब ऐसा नहीं होता है, जब पानी बाहर भीतर से बाहर निकल रहा है, तब the suction pressure is basically is created and the cell basically loses water and the cell collapses. Okay, suction is happening. पानी निकल रहा है, cell का cytoplasm is collapsing. एक प्लाज्मोलिसिस कहते हैं इसको, we call plasmolysis. So तब a suction pressure is created. Suction pressure is zero जब when it is zero, जब the wall pressure and the turgor pressure they balances each other, तब zero होता है. So basically in a turgid cell suction pressure zero होता है. Again these concepts देखो, students, we have studied cell the fundamental unit of life. तो NCERT का जो क्लास 9 का जो चैप्टर है, यहाँ पे ये सक्शन प्रेशर का कॉन्सेप्ट वी डोंट नॉर्मली लर्न. तो इसको जानने के लिए दिस इज वेयर द एक्स्ट्रा स्टडिंग इज रिक्वायर्ड, द एक्स्ट्रा रिसर्चिंग इज रिक्वायर्ड. इसीलिए NSEJS का जो प्रिपरेशन, एज आई सेड, इट्स अ लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. इस पिक्चर में वी कैन सी कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर water to move in or move out of the cell, that's called the osmotic pressure. Turgor pressure is the pressure applied by the cytoplasm in the cell wall. Wall pressure is the opposite, the pressure applied by the wall in wall on the cytoplasm. And suction pressure is a suction that is created जब पानी cell के बाहर में जा रहा है, cell is collapsing, that suction is created. Okay, और ये suction pressure zero रहता है in a turgid. नेक्स्ट, थेबेसियन वाल्व इज प्रेजेंट. ये भी देखो एक सर्कुलेशन, लाइफ प्रोसेस सर्कुलेशन का क्वेश्चन है. तो नॉर्मली ऐसे थेबेसियन वाल्व के बारे में वी डोंट स्टडी, बट अगेन इन NSEJS प्रिपरेशन वी नीड टू नो ऑल दिस एक्स्ट्रा थिंग. तो थेबेसियन वाल्व कहाँ पे होता है? थेबेसियन वाल्व कहाँ पे होता है? ये एक it's a valve. Valve का मतलब anything that is valve, जैसे ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, दे अलाउ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. तो अगर ड्राइंग अ हार्ट का पिक्चर, so let's say this is the picture of the heart. We know this is the right atrium, left atrium, left ventricle, roughly right ventricle. Okay, तो ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. तो थेबेसियन वाल्व क्या होता है? ये एक ऐसे, यहाँ पे राइट एट्रियम में एक ऐसे एक इट्स बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन, एक वेस्टिज. तो बेसिकली जो ह्यूमन जो एम्ब्रियो में रहता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ये थेबेसियन वाल्व इज एक्चुअली फंक्शनल, है ना. एम्ब्रियो के टाइम में थेबेसियन वाल्व का एक्चुअल काम होता है. और एक there is a small chamber present during the embryo, जहाँ से blood flows into the right atrium.
तो ये चेम्बर और राइट एट्रियम के बीच में देयर इज दिस थेबिसियन वाल्व is present. So it's an embryonic structure. It's a vestigial organ जो एक adult में इसका कोई काम नहीं है. So let's try to understand this concept. So basically this is the Thebesian valve. Right atrium का base में होता है. This is the right atrium. This is the left atrium. This is the right ventricle. Left ventricle तो देखो in the Thebesian valve is present at the base of this right atrium. What do we know more about this? There is this small chamber called sinus venosus. ये embryonic. This is a picture of an embryonic heart है ना. embryo का एक heart का picture है. तो embryo में ऐसे एक chamber होता है. उसका नाम है sinus venosus. ये sinus venosus से deoxygenated blood कहाँ से आता है? Sinus venosus से it is coming to the right atrium. और ये sinus venosus में there is this valve which is called the Thebesian valve is present. So so the Thebesian valve is a portion of the sinoatrial valve. It's a portion of the sinoatrial valve. एक sinoatrial valve कैसे एक valve होता है. ये valve का एक छोटा सा portion, छोटा सा part is Thebesian valve, which is a valve in the heart that controls the flow of blood from sinus venosus. ये जो एक small embryonic valve, blood collecting chamber है ना. So sinus venosus से we have the sinoatrial valve और Thebesian valve इसका एक small portion है. And ये sinus venosus से blood आके it is filling the right atrium. Okay, so that is, so basically it's a vestigial organ. It's a not exactly vestigial. It's a remnant. यानी कि embryo का एक छोटा सा portion रह गया in the adult. Adult में इसका कोई function नहीं है Thebesian valve का, but ये embryo में था, उसका भी थोड़ा सा एक portion रह गया. That's why it's called caudal remnant. Caudal का मतलब towards the tail region, towards the base of the right atrium. Caudal remnant का मतलब जो a part which is still remaining. Embryo में इसका एक function था, that is it is helping in the passage unidirectional flow of blood from sinus venosus to the right atrium. Adult में इसका कोई function नहीं है, but ये अभी भी रह गया है, इसका थोड़ा सा part अभी भी रह गया है. It is present near the coronary sinus. यहाँ पे coronary sinus क्या होता है? ये एक vein होता है, the vein that is basically blood from the heart, deoxygenated blood from the heart is going to the coronary sinus, और coronary sinus के बाद it is going into the coronary sinus से deoxygenated blood is getting inside the right atrium है ना. Heart is basically supplied by the coronary artery. देखो heart को भी खुद का heart को भी blood चाहिए. Heart is pumping blood to the entire body, but heart को भी blood चाहिए. तो blood is basically so we have coronary artery and coronary artery, and we have coronary vein. So coronary vein is basically collecting the deoxygenated blood and pouring it into the right atrium. And coronary artery is the artery that is supplying the oxygenated blood to the heart. Heart को भी blood चाहिए है ना. तो ये coronary artery is basically very close to the Thebesian valve का opening. Okay, so right here is the Thebesian valve. Coronary artery देखो यहाँ पे, this is the coronary artery, sorry, coronary vein. Coronary vein is actually dumping the deoxygenated blood of the heart into the right atrium. All right. Next set of questions. So in the following questions, any number of options may be correct. यानी कि A, B, C, D, all options can be correct. Multiple options can be correct. So students have to identify the correct answers, और सब आंसर को you have to actually select. अगर कोई क्वेश्चन का 4 आंसर्स आर करेक्ट, you have to say all 4 answers are correct. So again, this is a new level of difficulty. ऐसे questions भी we can see in NSEJS coming. First question is the basic event in evolution. The basic event in evolution is what? Topic evolution. What is the basic event of evolution? Change in DNA, change in habitat, change in nature of food, change in climate. So basic event of evolution. Evolution कैसे होता है? Due to change of DNA, due to change in habitat, due to change in nature of food, due to change in climate. Evolution कैसे होता है? Sorry. So basically there are two answers. बहुत सारे books I've seen, I've done my own research, and also I've looked at the CB publications, which are actually very
popular publications for NSEJS. So according to CV publications, A, B, and D are correct. According to my research, A, B, C, D, all 4 options are correct. जब देखो there is change in DNA, डीएनए में जब चेंज होता है तब दैट लीड्स टू न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, एवोल्यूशन होता है. जब चेंज इन हैबिटेट, जब खाना में, हैबिटेट मींस व्हेन नॉट खाना, हैबिटेट मींस व्हेन देयर इज द सराउंडिंग, सो व्हेन द हैबिटेट चेंजेस, so this creates a pressure. Only those which are better adapted to the new habitat है ना, जब सराउंडिंग चेंज हो जाता है. लेट्स से एक स्पीशीज वाज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, अभी फॉरेस्ट से नाउ दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अ डेजर्ट कंडीशन है ना. तो यहाँ पे ओनली द मोस्ट फिटेस्ट विल सर्वाइव. ऐसे species में ऐसे members which can tolerate the desert climate, which can retain water, which can tolerate the strong desert climate, यानी कि scorching sun, जिसका body is little bit covered by thick covering है ना, ऐसे ही members will actually survive, others will perish है ना. So basically change of habitat can also cause evolution, can cause speciation. Change in nature of food, ये भी can create a pressure that can lead to formation of lead to speciation, lead to evolution. अगर खाना चेंज हो गया है, अगर फूड अवेलेबिलिटी चेंजेस, पहले एक फूड मिलता था अभी एक डिफरेंट फूड मिलता है, तो नाउ द मेंबर्स व्हिच कैन ओनली अडेप्ट टू दिस न्यू काइंड ऑफ फूड, ओनली दे विल सर्वाइव. चेंज इन क्लाइमेट ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट. अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, let's say temperature ज़्यादा हो गया due to global warming, only those, let's say a big group of bacteria which can only survive higher temperatures, they will survive. So that will lead to a new evolution. So according to my research, basic event in evolution can be because of all 4 reasons: change in DNA, change in habitat, change in nature of food, change in climate. तो देखते हैं. So change in DNA का मतलब we have the evolution is often defined as a change in the genetic composition of a population over time. कैसे genetic composition can change? So our DNA sequence can change. That can lead to so mutation can lead to DNA sequence change. Okay, genetic drift can lead to a change in DNA. Natural selection के कारण हो सकता है. So natural selection, abhi I gave an example that any kind of member of the species which is let's say we have 2 kinds of deers. We have a deers with short legs and deers with long legs. तो ये जो long legs, उसका genetic makeup थोड़ा different from those so from the short leg deer. So the long leg deer is a variation of the leg length. Short leg is a type of variation and long leg is a variation. So basically this is a change in the DNA. which so long leg deers can run faster है ना. अगर कोई शेर या कोई टाइगर और लायन अगर is chasing, so long leg deers can run faster, they can save themselves. So this is kind of so natural selection. So nature will select the long leg deers. Short leg deer will be caught by the tigers, they will be eaten है ना. तो the long leg deers, they will reproduce and उसका जो progenies, they will make longer actually progenies, long leg deer progenies है ना. तो इसको कहते हैं natural selection. Genetic drift is something we keep learning about this thing in the NCERT book. के एक beetle population is there. We have majority are red beetles and small are blue beetles. अभी एक हाथी goes past, walks past this whole population of beetles, और ऐसे accidentally they kill all the red beetles. तो पहले रेड बीटल वाज डोमिनेंट, बट हाथी वहां से वॉकिंग के बाद हाथी stamping the red beetles and only the blue beetles are remaining. तो इसको भी कॉल genetic drift, यानी कि a rapid overnight change of genetic the overnight change of the population. पहले population में red beetle was dominant, अभी हाथी जैसे ही वहां पे स्टैम्प करके निकल गया, killing all the red beetles, only the blue beetle population is surviving. So now the blue beetle, they start glowing and the blue beetles start growing and they become dominant and the red beetle is extinct. इसको कहते हैं this rapid change of the population frequencies को हम कहते हैं genetic drift. So ये सब changes happen in the DNA and that leads to evolution. So change in DNA is definitely a very basic event of evolution. Change in habitat is also, as I said, के species move from forest to desert. तो यहाँ पे those which can adapt to the desert conditions will only survive and that will lead to evolution. Change in food habit, as I said, के
species that evolves to become better at consuming a new kind of food. अभी food पहले एक food मिलता था, अभी food change हो गया. अभी the members which can adapt to this new food only they will survive. That will lead to evolution, change in climate also we said. So all four of these are basically required for. So if we see the basic event in evolution, change in DNA, change in habitat, change in nature of food, change in climate, sabhi important. Next question is the last question of today is from chapter control coordination. यहाँ पे medulla oblongata of the brain contains what? Medulla oblongata of the brain में we have the forebrain, the midbrain, the hindbrain. Hindbrain का three parts are the pons, the medulla, the cerebellum. ये तीनों मिलके hindbrain होता है. तो medulla oblongata is the एकदम posterior part of the brain. ये medulla oblongata becomes the spinal cord. तो इसका it contains what? It contains cardiac center, it contains respiratory center, it contains vasoconstriction center, but इसमें third center नहीं होता है. तो यहाँ पे again remember these kind of questions, multiple options you have to select. So A, B and C are correct. Third center कहाँ पे होता है? Hypothalamus में होता है. Cardiac center क्या होता है? Cardiac center is a center जो medulla oblongata में होता है, which controls the heart rate. Okay, so medulla oblongata controls all these kind of involuntary functions. Involuntary का मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है. Respiratory center is a center present in the also the medulla oblongata. It actually helps in controlling our breathing rate. And vasoconstriction center is a center which actually helps in controlling the vasoconstriction. constriction यानी कि blood vessels are constricted. Blood vessels are becoming narrow, है ना? Vaso and blood vessels are becoming, उसका diameter is increasing, diameter is decreasing, है ना? Blood vessels का diameter increasing, decreasing. Vasoconstriction is when the blood vessels का diameter is decreasing. Vasodilation is when blood vessels का diameter is increasing, है ना? तो ये सब are present in the medulla oblongata. Coming to the So cardiac center is medulla oblongata contains cardiac center, regulates heart rate. Respiratory center, medulla oblongata also contains the respiratory center, rhythmic pattern of breathing. Respiratory centers actually also pons में होता है. Pons also have the respiratory centers which helps in inspiration and expiration. Just for some extra knowledge. Vasoconstriction center, the medulla oblongata has a vasoconstriction, regulates the blood pressure by controlling the diameter of the blood vessels. Third center ऐसा कुछ नहीं होता है. Third center कहाँ पे होता है? Third center we see in the hypothalamus. Hypothalamus, we know it is the base of the forebrain में hypothalamus, and it actually regulates the fluid balance. जब body dehydrate हो जाता है, then it activates the third center. Whenever the body is dehydrated, जब पानी का जरूरत होता है, तब देखो it activates our third center and we drink more water. We also retain water. The ADH, the antidiuretic hormone is secreted. ADH. The vasopressin hormone या ADH is secreted from the posterior pituitary और ये जाके सीधा it binds into our in our the distal convoluted tubule and the collecting duct और वहाँ पे they actually absorb water. So ये सब होता है because the third center is present in the hypothalamus. This is basically the picture of the brain. और यहाँ पे we can see the hindbrain comprises of the cerebellum. We have the pons, we have the medulla oblongata. Medulla oblongata has a function of it helps to control the blood pressure because it has a vasoconstriction center. It controls the heart rate and it also controls the breathing rate. So that ends today's lecture. I hope students my lecture was informative. Keep watching my biochemical classes for more such classes. I will also complete the other PYQs 2009, 10, 11, 12 ऐसे हर साल का NSEJS का PYQs I will cover. I will also teach important concepts. So keep watching my lecture and it will help you to prepare for all these kinds of exams. So all the best and see you in my next class.